Three, two, one, and go. I think we are live on YouTube as well. So, first of all, just wanted to check whether my audio and video is clear. If it is clear, just write clear in the chat box. राइट, अरे बता दो क्या मेरी मीठी मीठी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? सर मीठी का तो नहीं पता, आवाज पहुंच रही है। ठीक है, बता दीजिए। कैन यू सी मी? कैन यू हियर मी वेल? पीपल ऑन द जूम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। पीपल ऑन द जूम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। जल्दी जल्दी बता दो यार, यूट्यूब की जनता आप भी बता दीजिए। क्या बात है, ऐसे आप थम्स अप भी कर सकते हैं तो मुझे दिख जाएगा। यस सर, वी कैन सी यू, वी कैन हियर यू वेल। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। Right. Great, 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 great. So this is our first session for this May 26th examination. Right. Of course, we have planned a lot of series of sessions for you guys, which is there. And every session will be having a pre-decided agenda, which we are going to be ensuring that that is going to be done by the end of a session. Trust me, today is one of the very, very interesting session, which is going to be helping you to understand what exactly you need to do after your examinations are over. So that is what the agenda of today's session is. राइट सर, आर वी रिक्वायर्ड टू हैव अ पेन एंड पेपर? हाँ जी हाँ दोस्तों, पेन और पेपर लगेगा। तो जाइए पेन और पेपर लेके आइए। ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गोना बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड दैट रिक्वायर्स, इफ यू कैन राइट इट डाउन, इफ यू कैन जॉट इट डाउन, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच इज देयर। राइट, अरे देखो ऑडिट की नोट्स में थोड़े से पन्ने बचे थे, वही वापर लो और क्या। जाइए पेन एंड पेपर लेके आइए फटाफट फटाफट। क्या बात है, तुषार जी तो पेन एंड पेपर पहले से लेके बैठे हैं। राइट, इट्स रियली गुड टू सी ऑल ऑफ यू दोस आर हियर। यूट्यूब की जनता आप भी कनेक्टेड रहिए, आप भी कंफर्मेशन बताइए। यस, आ गया है सबसे कंफर्मेशन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई वांट टू सैल्यूट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। द रीजन इज, राइट, ये सेशन वही लोग देखते हैं जो जीवन में सीरियस है। मतलब कि आज वही लोग यहाँ हमारे साथ कनेक्टेड है, दोज हु आर सीरियस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू आर वन स्टेप अहेड एज कंपेयर टू अदर्स। राइट, बिकॉज आप genuinely you are thinking कि bro what I need to do in my career which will help me to pivot in my journey, what are something need to do it out so that I can do something great in my life, and that is why you are here. Right, I think that is the agenda of today's session कि हम अभी करें क्या कि भैया जिससे हमें एक एज मिल जाए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन बाय द एंड ऑफ अ सेशन। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा, विल बी टेकिंग आउट एट द एंड ऑफ अ सेशन। लेट मी कंप्लीट द एंटायर सेशन व्हिच इज देयर। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। राइट, लेट्स सी हु कैन आंसर इट फास्ट। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। व्हेन यू आर इन माय सेशन, यू हैव टू पार्टिसिपेट। द सेशन इज लाइव गाइस। राइट, तो आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट एंड इंटरैक्ट इन द चैट। नाउ everybody has a one simple goal after becoming a CA. What is that goal? Anyone in the chat box? क्या है आपका सपना? हा, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ड्रीम आफ्टर बिकमिंग ए सीए? सच सच बताइए, बबीता जी की कसम है आपको। हा, कोई कह रहा है बबीता कौन है सर? अब अरे जेठालाल की क्रश, तारक मेहता वाली। हो आय हाय 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 हाय। मेनी ऑफ देम आर सेइंग माय ड्रीम इज टू अर्न द मनी। पैसा कमाना मेरा सपना है। बहुत बढ़िया। एवरीबडीज ड्रीम इज देयर टू अर्न अ मनी। और जो लोग जूम पे कनेक्टेड है, इफ यू कैन कीप योर वीडियोस ऑन, विल हैव अ ग्रेट सेशन, वी कैन इंटरेक्ट विथ यू गाइस मोर एंड इन अ बेटर मैनर गाइस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू और मेनी ऑफ यू हैव अ ड्रीम कि सर आई हैव टू अर्न अ मनी। आई विल आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, हु विल गिव यू मनी? सीए बन गए मान लीजिए आज, सब अपने, यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव एडेड दोस टू लेटर्स इन फ्रंट ऑफ योर नेम। राइट, तरुण आज कल से अपने आप को बोलने लगा, मैं तरुण नहीं सीए तरुण हूं भाई। हाँ, तो ऑल ऑफ यू हैव become a chartered accountant, but the first question is, who is going to be giving you money? Of course the companies and the corporates are going to be giving you money. Agree? Companies आपको पैसे देगी, and of course when you'll get a money, when you'll do a job, when you'll work under some of the top companies which is there, either it is any of the big fours or any of the good companies which you can think of like Amazon, Flipkart, which is there. Right? Now, first let us understand what exactly the company needs from you guys, and how do we build out this needs, how do we accomplish this goals, what is needed by a company. ठीक है, तो अब पहला सवाल देखते हैं कौन आंसर कर पाता है चैट बॉक्स में, एंड हु इज स्मार्ट इन द क्लास. What do you think? What is something will company will be requiring from you after you become a chartered accountant? What do you think? क्या चाहिए कंपनी को आपसे? What is required by a company so that they can give you what money you want? बच्चा कहता है स्किल सेट चाहिए. वेरी गुड, स्किल सेट चाहिए. बच्चा कहता है कि भैया कंपनी को हमारे साथ एक्सपीरियंस चाहिए. ओके, एक्सपीरियंस चाहिए. बच्चा कहता है कंपनी को नॉलेज चाहिए. ओके, नॉलेज चाहिए. ओके, बच्चा कह रहा है एक स्पाइक लगेगा इफ आई वांट टू गेट इनटू दैट कंपनी. ओके बेटा,
That is there. Chalo, let's see from my experience what I'm telling you out. There are 6 important things which every company needs. राइट 6 ऐसी चीजें हैं जो कंपनी को चाहिए बिफोर यू आर एंटरिंग इनटू दोस कंपनीज व्हिच इज देयर राइट एंड नाउ हियर यू कैन स्टार्ट writing it down, or even if you don't write it down, it's fine. I'll be sharing you all the PPTs and stuff. Focus on the session which is there. राइट कंपनीज को ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए आपसे. अगर आपके पास इनमें से राइट 3 या 4 भी हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू गेट अ ह्यूज एज ओवर अदर्स which is there. Let us go one by one, step by step, which is there. The first most important thing what is needed is the reference which is there. What does a reference means? Reference का मतलब होता है कि भाई let's say if I am a qualified chartered accountant today, I want to apply in a company called as ITC Limited. I don't know how many of you have heard of a company called ITC. I think सबने सुना होगा. कुछ लोगों ने अलग कारणों से सुना होगा. हा हमें पता है. ठीक है. तो लेट्स से कंपनी कॉल्ड एज आईटीसी लिमिटेड वांट्स टू हायर यू राइट. मान लेते हैं आपके अटेम्प्ट में 10,000 लोग सीए बने. हाउ मेनी ऑफ यू विल अप्लाई इनटू दिस कंपनी? 11,000 कर देंगे सर. कैसे? अरे बेचारा इंटर वाला भी अप्लाई कर देगा. क्यों? क्योंकि पैकेज ही वो 24 लाख का देता है राइट. दैट इज देयर. एवरी टॉम एंड डिक एंड हैरी वांट्स टू गो इनटू दिस कंपनी. एग्री? सबको जाना है. बट शुभम भाई द क्वेश्चन कम्स इज कंपनी विल सिलेक्ट whom? किसको सिलेक्ट करेगी? जिसके पास रेफरेंस रहेगा. सीधी बात, नो बकवास. Right? Of course, the edge is gonna be given to those candidates or people out, those who have a reference. Now, देखो, please understand what I'm trying to explain you. पहले आप सेशन समझो क्या है. शुरू के 30 मिनट मैं आपको ये समझाऊंगा what is needed. आपको क्या चाहिए, क्या करना है. After that next 30 minutes, I will teach you how you can do it. जैसे कि one thing which I told you is you need a reference. ना आप दिमाग चमका के भैया अपने को रेफरेंस चाहिए to get a job. अपने को रेफरेंस चाहिए to need a money. Yes, sir. How to get a reference? That is what I'll teach you in the second half of a session after the next 30 minutes. So please request you to please watch this session till the end and also share this links with your friends and stuff which is there. ठीक है sir. So if I have a reference, I can get an edge over others. That is true? The answer is yes. Number 2, the most important thing is resume. Acha. Now parallelly, let me also answer this question for you. Sir, can I get the reference from today onwards till my results are out? क्या कोई मुझे बता सकता है आज से लेके जब तक कि मेरा रिजल्ट नहीं आता तब तक के क्या मैं रेफरेंसेस इकट्ठे कर सकता हूं? कैन आई डू द सेम? कैन आई डू द सेम? यस और नो इन द चैट सर. यस और नो इन द चैट. क्या ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बच्चा कह रहा है हाँ सर मैं कर सकता हूं. वेरी गुड सर. कैसे करना है बड़ा भाई आपको बताएगा. आई एम गोना बी टेलिंग आउट, डोंट वरी. चल नेक्स्ट. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अ रिज्यूम. Now I'll ask you, देखो I'll keep on asking a lot of questions to you, तो please participate. Participate करोगे तो खुद ब खुद मजा आएगा सेशन में. Now the second most interesting thing is the resume. But I would like to ask you one more question before that. And the answer of a question automatically will come from your smile on the face. ठीक है? Now the question is, do you want to continue with your boss where you did your articleship after becoming a CA? हंस दिया, हंस दिया. काफी लोगों ने हंस दिया. क्या आप अपने उस बॉस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो सीए बनने के बाद? कुछ लोगों ने दिल से अपनी पूरी भड़ास निकाली है चैट पे. बोले सर बॉस का नाम ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है. ये भी बात सही है. अच्छा. बच्चा कहता है नहीं सर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ माय बॉस. ओके. Number 2, do you want to work in the same domain what you have done in your articleship? Let's say you have done into start audit. Let's say you have worked into start audit or indirect tax or direct tax. But क्या आपको same domain में काम करना है क्या? Many of you want to change your domain, right? Or many of you have not even explored what is there in the market. ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है. Right? देखो, please understand. Now you will be moving towards a specialization after becoming a CA. Which is there because many of you, when you are entering into a corporate world or getting into a big force or getting into an industry, you are expected to have a specific knowledge of the respective domain to get an edge over others.
राइट, एंड दैट इज वेयर यू मेक अ रियल मनी. पैसा बनाना है तो आपको कोई सेक्टर में, कोई डोमेन में स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना पड़ेगा. देन दैट इज हाउ यू मेक अ मनी आउट, which is there. Now, let's say today you have done your articleship in start audit and indirect taxes. But आज आपका मन हुआ कि नहीं भाई, I want to, I want to build my career into FDD, or I want to build my career into IB, or I want to get into, let's say, FP&A, or I want to get into finance. मुझे अब इंडस्ट्री जाना है, मुझे स्विगी में काम करना है, मुझे फ्लिपकार्ट में काम करना है. Now, the first question comes is your resume ready for the place where you want to get into? The answer is no. And that is where many of you lag in your journey. Because please understand, what is this session all about? Session is all about what we have to do after becoming, after results are out, what you have to do after the exams are over, and how we can do it. Now, the first thing I came to know that कि बिडू अपने को एफडीडी में जाना है या आईबी में जाना है या एफपीएनए में जाना है, तो मेरा सीवी उसके हिसाब से रेडी नहीं. I want to put something in my resume which will give me an edge over others. मैं आपको एक दो सीरीज भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए. राइट, आई वांट टू गेट और डू समथिंग व्हिच विल हेल्प मी टू बिल्ड एन एज ओवर अदर्स. तब जाके माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन विल इंक्रीज. आंसर इज यस. तो सेकंड थिंग आई गेट टू नो दैट कि ब्रो, फ्रॉम टुडे टिल द रिजल्ट्स आर आउट, द सेकंड थिंग आई हैव टू वर्क इज ऑन माय रिज्यूम. मेरे को अपने रिज्यूम पे काम करना है. टुडे आई नो वेयर आई एम. I have to see and find out where I have to go. Sir, but I don't know where to go. Don't need to worry. On day after tomorrow, that is on Monday, we have a domain guidance session. If you don't know which domain to get into, please join that session live. Trust me, your problem will be solved. Right, बड़ा भाई ने आपके लिए सेशन रखा है मंडे को. आ जाना लाइव, डोमेन भी बता देंगे कैसे चूज करना. That has been taken care of. तो सेकंड चीज समझा कि भाई resume को we have to work on. Sir, but the question comes is how to work on, what need to be worked on, we'll be discussing in the second half. पहले आप समझिए क्या चीजों पे काम करना है, which is that. The first thing, reference. Second, resume. Okay, sir. Third, very, very interesting thing is the communication skills. Now, do you know, right? If I show you the statistics which is there, right, one of the very interesting thing which was happening before is, right, this is the, although this is a thoda sa advanced data, but again, you can just see it out which is there. So this is a sector-wise, company-wise placement details which has happened around, right? So this has been a statistics for the last 3-4 years, which says that 20 to 35% of the chartered accountants are getting placed into outsourcing GCC and shared services, which is there. What does that mean? That means that these people are working mostly with the companies which have a back office in India. What does the back office means? बैक ऑफिस मतलब ये होता है कि उसका मेन ऑपरेशन या धंधा बाहर से हो रहा है, फॉरेन कंट्री से हो रहा है, एंड दे हैव सेट अप देयर फाइनेंस फंक्शन इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज यू गाइज आर गुड एट accounting, you guys are, again, should not say it out, but you guys are a cheap labor that is there, right? You guys are good at communication. But yes, when you're going to be going into this type of companies, into GCCs or outsourcing or shared services, right, your first thing which is going to be checked is your communication skills, guys. जैसे कि if you go for an interview for Deloitte USI, you have a Watson test. That's an English communication test. And lot of companies are setting up their back offices in India. Like Unilever is there, like JP Morgan is there. Right? JP Morgan का पूरा बैक ऑफिस इंडिया में है. यूनिलीवर का पूरा बैक ऑफिस इंडिया में है. शेल कंपनी आपने देखी होगी या सुनी होगी, जिसका पेट्रोल पंप है. That has a back office in India. Right? So lot of companies are setting up their back offices in India, and for that, they require it to have a good communication skills with you guys. राइट, मतलब उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि यू गाइज आर गुड इन टर्म्स ऑफ अ कम्युनिकेशन. सर, कैन वी ऑल्सो वर्क ऑन दैट, और कैन वी चेंज द कम्युनिकेशन स्किल, और कैन आई इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स टिल द रिजल्ट्स आर आउट? द आंसर इज अगेन यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सर, कैसे करना बड़ा भाई सिखाएगा थोड़ी देर बाद. पूरे सेशन को आखिरी तक देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सर, academics is also a shortlisting parameter. The answer is yes. Let's say companies, when you're going to be sitting for an interviews, although I should not say it out, but that's a fact, you have to take it out hard. Some companies will filter based on attempts. Some companies will filter based on rank. सत्य वचन है तो है. बट सवाल ये है, कैन आई चेंज माई एकेडमिक्स? एनीवन इन द चैट बॉक्स? कैन आई चेंज माई एकेडमिक्स? अरे कर सकते होंगे ना? नहीं कर सकते? कर सकते हैं. जैसे कि इज एनीवन रेडी टू गिव अ सीए फाइनल एग्जाम अगेन? आई विल स्पॉन्सर योर फीस.
मतलब रिजल्ट आने के पहले बोल रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद करोगे तो सरवन रिजल्ट के बाद आप करना, अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं, है ना। ठीक है, तो नो वन इज रेडी टू गिव योर एग्जामिनेशन अगेन, राइट। कोई किसी को बोलूंगा कि चलो आप फिर से सीपीटी लिखो और आईपीसीसी लिखो और फाइनल लिखो, तो कोई नहीं करेगा, नो वन इज गोना बी डूइंग दैट, राइट। यू कैन नॉट चेंज योर एकेडमिक्स। तो एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट इज चेंज ऑफ एकेडमिक्स। ये तो आप नहीं बदल सकते, दैट इज गॉन। ओके, नेक्स्ट, ब्रांड नेम। लॉट ऑफ कंपनीज विल बी लुकिंग फॉर अ ब्रांड्स इन योर सीरीज, राइट। वो देखेंगे कि भैया, लेट्स से, वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से यू आर गोइंग इनटू स्टार्ट ऑडिट, they will see that have you done a quality work in your resume or not. What is a quality work? Let's say they'll see that have you worked on the clients which have a IFC applicable or not. IFC is internal financial control. They'll see that you have worked on Caro or not. They'll see that you have worked on listed client or not. They'll check that are you aware of some disclosure requirements as per India's 115 or not. So they will be seeing कि do you have a quality work or brand in your CV or not, कि ऐसे ही सिर्फ काम चलता काम करके आया कि नहीं. So that is what they are going to be checking in your CV. That is a brand name. Okay. Of course, can we build it out from today till the results are out? The answer is again yes. And the beauty lies in the last question. Sir, can I change my articleship experience? Sir, अब तो articleship हो गई. Can I change it out? Can I change my articleship experience? Few of you are saying no, but I will say the answer is yes. This is where the real twist comes. This is where the real twist comes. Hear each and every word very, very carefully, and trust me, this is a game changer for you now. बच्चा कह रहा है आर्टिकलशिप तो हो गई, आई कैन नॉट चेंज इट आउट. दैट इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस ब्रदर यू आर कैरिंग इन. यू कैन चेंज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ऑल्सो. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से टुडे यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. ठीक है, आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं. Now, when you're going for an interview, you will be carrying your resume. Yes. How would interviewer come to know that what work you have done in your articleship based on what you've written on your resume? Agree? Right? Let's say you have written Ind AS. The interviewer will come to know that you have worked on Ind AS. Let's say you have not written Ind AS. You have written, let's say, AS. He'll get to know that you have worked on in AS. Let's say in your articleship, you have not worked on Ind AS. Or let's say in your articleship, you have not worked on any of the companies where you have prepared a financial statement. You have never worked on preparation of financial statements. But I say it out, bro, today you start learning how to prepare a consolidated financial statements, which is there, and put it out in your resume. Did you write anything? The answer is no. What is resume? Resume is something where you put out your work, what you actually know. What is resume? It is your journey of last 20-25 years, which you're summarizing it in a one page where you're talking about what is the work I have done in the past, which will help you on a future date. अरे भाई, आसान भाषा में बोले तो तुम लोग कलयुग में जी रहे हो, और तुम राम बनने की कोशिश करोगे तो सीता का हरण तो होगा ही ना. सीधी बात है. अरे चीजें नहीं आती है तो रूल इज सिंपल, लर्न द थिंग्स एंड पुट इट आउट. इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? चलो पूछेगा व्हाट इज इंड एस 115. हम बताएंगे ना, हमको आता है ना. चीजें नहीं आती थी तो सीख ली. ज्यादा राम बनोगे तो फिर तो जॉब नहीं मिलेगी. प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स अ फैक्ट एंड द ट्रूथ ऑफ अ वर्ल्ड, राइट. बिकॉज सच बोलो या ना बोलो, that's a fact. Many of you do not have a great articleship experience. Many of you do not have what exactly is needed in your journey. Right? अगर मेरे को 15 लाख से ज्यादा का पैकेज फोड़ना है, और if I want to get into the best companies, I have to learn the things and put it out in my CV. जरूरी नहीं है I'll put it under the articleship. I can put it under the other heads like extracurricular activities or certifications or different heads. That is there. Important क्या है कि क्या मुझे काम आता है क्या? Answer is yes. I am getting it what I'm trying to say. Right? Let's say you're targeting an investment bank. किसी ने IB में काम किया है क्या? नहीं किया है. बट ऐसा थोड़ी है कि किसी का IB में नहीं होगा. होगा. कब होगा? When you'll know how to prepare the financial model. तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं लिखूंगा CV में, तो कोई बात नहीं, you'll not get a job then. That's a fact. So what I'm trying to teach you out here is, please understand, you can change your articleship experience also. You can change your articleship experience also, provided you are ready to work for the most important things, and those are the 5 things which is there. You cannot change your academics. Other than that, you can change all of the things which is there. And once you start changing these things out, trust me, you know what is going to be happening?
your CV, your resume, or your personality will start standing out as compared to others, and you'll get an edge over others. Right? So that is something which I wanted to tell you out. I hope till now the things are clear to everyone. What are the 5 things we have to change out in this journey till the results are out? ये क्लियर है तो अब नेक्स्ट चीज बताने में मजा आएगा कि कैसे चेंज करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया रेज्यूमे का तो ज्ञान दे दिया आपने, अब चेंज कैसे करूं ये बताओ. Right? So that is something we have to understand it out. But I hope so far the things are clear to every one of you. Right? And I hope you guys are also enjoying the session. समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है. Right? It is there. Yes, sir. Clear, clear, all clear. Very good, guys. Very good. Clear हो गया, मजा आ गया. राइट, कुछ लोग तो छुप के बैठे हैं, अरे जूम वाले दोस्तों शक्लें दिखा दो, मजा आ जाएगा. राइट, और यूट्यूब वाले दोस्त तो कैसे शक्ल दिखाएंगे, बट यूट्यूब वाले लाइक कर सकते हैं. क्या बात है. वेरी गुड गाइस, चलो ग्रेट. ये चीज क्लियर हो गई सर. अच्छा, whatever I was just saying it out, it has been written here. Don't worry, I'll just share this in the WhatsApp group. The WhatsApp group link has been there on a YouTube, which is there. I'll also share the WhatsApp group with you guys, those who are on a Zoom. But जो YouTube पे connected है, description में आपको group का link मिल जाएगा. ठीक है. Now, before we go to that, एक थोड़ा सा बम गिरा देता हूँ. बम मतलब किस चीज का? Right, although I put it out on my YouTube before also, but although I not say it out, but yes, एक बार थोड़ा सा expected dates भी देख लेते हैं results की, कि when you can expect the results, which is very much interesting to all of you. Generally जो मैं predict करता हूँ उसके 1-2 दिन आगे पीछे ही आता है, which is there, right? But yes, that is what it is. तो थोड़ा सा past pattern देखते हैं. The past pattern always says that out कि whenever the exams over, right, the results generally come out between 40 to 50 odd days, which is there, and the campus starts general. जो ये बहुत पुराना statistics है, तो campus 30-35 दिन में चालू होता था. अब धीरे धीरे they have started reducing it out, which is there. They have brought it to 43. This has been reduced. Further, they have brought it down to lesser thing, which is there. इसको भी कम करना चालू कर दिया, which is there. And IC has been kind enough to reduce this 2 days, which is there. So the most interesting part which I wanted to show you for a January, result came in 45 days and the campus days has been reduced to 5. मतलब कि जैसे ही तुम्हारे रिजल्ट आए अगले 5 दिन में कैंपस के फॉर्म्स विल बी आउट. So that has been there. But let's see for you guys, this is what I'm expecting. You guys will be becoming a chartered accountant on 26th of June. That means you'll be adding those 2 letters in front of your name. तो 26 जून से आप अपने आप को सीए बोलना चालू कर देना, which is there, and you can expect your campus by 2nd of July. Right, 2nd of July 2026 से आपका campus का forms mostly is going to be out. ठीक है, that is there. This is not an official notification, but this is what my prediction, what does it says. ठीक है, तो आप देख लीजिए how many days and times you have, which is there. तो that is what you can carry it out. चलो great. Now let us move to the next very interesting part, sir. ये तो ठीक है, अब हमें बताइए इसको चेंज कैसे करें. How do we change this things around? ठीक है, चलो great. Let me just share the screen once again. I hope my screen is visible now. Bang on, great. Now the first things, let's talk about academics. We cannot change that out. The first thing, how do we get a brand name? ध्यान से देखेंगे और कुछ अच्छा लगेगा तो देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फोटो लेना है फोटो ले लीजिएगा. Although I'll share everything which is there. The first thing is, how do we get a brand name which is there? There are 3-4 places where you can get a brand names in your CV. The first thing is, of course, regarding the internships. That means one thing you have to think now, bro, let's say if I want to get into whichever domain, first you decide your domain where you have to get into, and parallelly try to get an internship into that area. That will help you to get a brand name for that work. सीधी बात है, लेट्स से मैं बिग 4 का पार्टनर हूं, आई एम हायरिंग फॉर अ स्टार्ट ऑडिट. अगर आपके सीवी में स्टार्ट ऑडिट नहीं है तो क्या मैं आपको हायर करूंगा? द आंसर इज नो. तो आप कोशिश ये करिए कि इन नेक्स्ट दिस 40 odd days till your results are out, which is there, right, what you can do, you can try to work on the bigger clients or try to join some smaller places which is there. Similarly, there are some of the places where you can go into, like you can join some FTH role. This is mostly going to be offered by a lot of global firms. I think EY GDS का opening आया था market पे. I'm not 100% sure, but I just run through it. कि what is FTH role? It's a fixed term hire, 3 months का contractual role रहता है for the people those who have given their examinations. You can try that role which is there. You'll be able to get it out on LinkedIn. So what they do, they will be hiring you for 3 odd months. You work there, and again you get a good brand name of a global firm on your CV. Parallelly, what you can do, decide the domain and build your expertise into that domain over a period of time. So this is a very good time for you guys, which is there. एक चीज आप ध्यान में रखिए, what I'm trying to say,
right? Of course, I have a session on this on 18th. That means day after tomorrow. If you have not decided your domain, I'll be helping you out day after tomorrow to help you decide your domain, which is there. But एक चीज ध्यान रखिए, you will get an edge of your journey only when you will start working from today till the results are out. Because what we have seen just now is जैसे ही results आते हैं, within 4 or 5 days the campus starts. So that is something which is happening a lot, which people earlier that was not the case, but from the last 2 3 attempts, they have reduced it very drastically. You know why? Because attempts 3 बार हो गए थे. तो आईसीआई को लगा कि अब कैंपस जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो उन्होंने इस पीरियड को शॉर्टन अप कर दिया. मुझे नहीं लगता कि वो वापस कम बैक करेगा टू 30 35 डेज विच इज देयर. तो जो क्वेश्चन था ना वो छीन लिया इन लोग ने आपसे कि अब टाइम टू कुछ नहीं चाहिए, अभी सीधा सीए बन गए, कल से जॉब पे आ जाओ. दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. द प्रॉब्लम कम्स इज कि भैया हमें जहां चाहिए वहां मिले तो काम करना. देखो, गेटिंग अ जॉब आफ्टर बिकमिंग अ सीए इज नेवर अ प्रॉब्लम. रंजन भाई, सीए बन के सबको जॉब मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज द वन वेयर यू वांट इज एक्सेप्शनल. नो, तुमको चाहिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख, राइट? और उसके लिए यू नीड टू पुट एन एफर्ट. So that is the first place where you can get a good brand name, which is there. You can search for good internships, right? Although when I'll open a LinkedIn, I'll just tell you how you can also search some internships, which is there, right? So that is something which I'll just show you. एक बार दिखाई देता हूँ, रुक जाओ. Let me just open my LinkedIn, right? What you can do is two, three things, two, three places where you can easily search it out. The first is you can go to Open to. Open to में यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे there's option to find a new job, right? So once you go here, right, you will be able to see it out. यहाँ पे internship का option है. This you can activate for yourself. ठीक है, तो this will give you an edge and this will help you find out an internship. And parallelly, the second place where you do is the job section. यहाँ पे जाके भी आप ढूंढ सकते हो कि semi qualified which is there. Plus there are a lot of other portals where you can just search it out, like Internshala is there, right? LinkedIn is there, right? So I'll just give you the list of portals also at the end of a session. So you can just have a snapshot of the same. So that is also a place where you can search for good internships. Okay. Second thing is you can also be a part of some NGOs, right? You can join some good NGOs which is there, right? Generally, एक favorite question होता है interview में, and that is asked to all the students कि what's a hobby? What's your hobby? इंटरव्यूअर पूछता है कैंडिडेट को कि बच्चा बताओ तुम्हारा हॉबी क्या है. और सीए वाले हमेशा एक ही जवाब देते हैं, सर आई एम अ सीए स्टूडेंट, आई डोंट हैव अ हॉबी. दैट इज अ वेरी पथेटिक आंसर विच इज देयर. ऐसा नहीं करना है. आई नो यू हैव डन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड स्टफ, बट नाउ इट्स अ टाइम टू बिल्ड आउट सम हॉबी. और कुछ नहीं है तो 2 पेड़ ही लगा के आ जाना. देयर आर लिस्ट ऑफ एनजीओज व्हिच यू कैन सी ऑन स्क्रीन, राइट? गो someday, the Sunday is tomorrow, you can go some plant your trees, right? Do something, at least have something out in your CV so that you have something to talk, right? Because no one wants a boring guy in their company. So have some good brand names. Small NGO work can also help you out. Although this helps you to bring an impact, and this also showcases leadership skills, right? Ki I've led a XYZ thing around in an NGO. You can also put it out, which is there. Then, of course, you can do some freelancing. What you can also do is you can reach out to some of your local firms nearby, right? And then you can, what you can do is you can also connect with them. Ki, sir, I want a 2 months, 3 months internship or paid work, which is there. So what you can do, you can reach out to those companies, even if it is for free, work there, and then you go it out and at least have the work in your CV, which is there. Parallelly, there are some of the other places. What you can do is I'll just open one of the very interesting virtual program by BCG. It's a 1 day internship at BCG. So a lot of people, what they do is I'll just show you the screen. What they do is people just go on 1 day internship with BCG, and that is something they put it out in their CV and show it out to the people around. So this is the link, 1 day internship. I'll just put it out in the chat as well as I'll put it out on the YouTube live as well. Right? There's a 1 day internship program. You can just have a look, right? कर लेना. Although इतना मजा नहीं आएगा, but anyways थोड़ा सा brand के लिए होता है कि I've done a 1 day internship with BCG, which is there. ठीक है, तो where you'll find out some simulation games are also there, and it's for 3 4 hours, right? And you guys are good enough to do next after one of the exam of CA. हा 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 हा. ठीक है, तो next करते जाना और देख लेना, and you can have a certificate here. So this is a 1 day internship program. You can see it out. Similarly, there's one more platform which is called as the Forage. You can also try it out here, where you can find out a lot of job simulations are also there, given by a lot of companies. So you can get a certificate from respective companies. Although इसमें इतना मजा आएगा नहीं आपको, but it is just for a certificate or a brand. मतलब I hope you understand what I'm trying to say. तो काफी बार वो चाहिए होता है कि let's say I'm really interested for
है ना? तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मुझे अब थोड़ा सा एआई का कुछ सीखना है, या अकाउंटिंग में चाहिए, या आई वांट टू बिल्ड आउट समवेयर अराउंड. यू जस्ट सर्च इट आउट व्हाट इज समथिंग व्हिच एक्साइट्स यू फ्रॉम हियर, एंड देन यू कैन जस्ट सी इट अराउंड कि अकाउंटिंग में कुछ चाहिए. देन यू विल गेट सम EY technology risk is for internal audit. This is for audit, right? तो एक बार audit का देख लो क्या होता है. This is a course which is created by EY. So you can just run through it, which is there. ठीक है, तो दिस इज द लिंक कॉल्ड एज द फोराज. यू कैन ट्राई इट आउट. पैसा वैसा ये इसको देने का जरूरत नहीं है, तो फ्री वाला ही है. ऑल्दो द ऑथर्स आर फॉरेन ऑथर्स, तो थोड़ा सा यू विल नॉट लाइक द कंटेंट एंड स्टफ, बट ठीक है. व्हाट्स बैड इन हैविंग अ ब्रांड व्हेन यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री, राइट? मतलब कोई चीज फ्री में मिल रहा है और अच्छा है तो क्या बुरा है. So that is what you can do if you have a time. Parallelly, you can have some good simulation games, right? If you can play it out, or if you want to play it out, which is there, right? तो वो भी आप देख सकते हो. But again, it's a bit costly. There are some of the simulation games which is there. Although we play one simulation game in GR Batch, which is a marketplace simulation, but that is something we'll discuss it later. ठीक है, so that is also you can play it around. ठीक है, तो I've just shared both the links with you guys. I hope you have got the same. So this is how you can have some brand names with your CV. Okay. Next is, of course, you can work on your communication skills, right? There are 2, 3 things which we have done for you, right? The first very interesting thing I just want to show you, although people are not good enough to use that, but I'll just show you how you can do the same. Okay, very interesting thing, right? Let's say if you want to improve your communication skill, you go to ChatGPT. ChatGPT will help you to do that, yaar. मतलब in the era of AI, what is stopping you to learn, right? जैसे कि you can go here, what you can do, click on voice. Help me improve my communication skills and help me prepare for interview. Improving communication is all about practice and structure. To start, try explaining complex ideas in simple words. Imagine Can you're talking you to someone have you've a discussion with me in English so that I can improve my English? Absolutely. Let's just have a casual conversation to get started. Tell me something you're working on these days and we can talk it through. The more we chat, the more comfortable you'll get. So I'm working on AI these days. That's exciting. What aspect of AI are you focusing on? Building tools, learning about it, or maybe applying it to something specific? Help me improve my Gujarati. ચાલો હવે આપણે થોડું ગુજરાતીમાં વાત કરીએ. તમે રોજિંદા જીવનમાં જે કંઈક રસપ્રદ કરો છો તે Help અંગે me improve my Marathi. चला मग आपण आता मराठीत गप्पा मारूया. तू सध्या तुझ्या ठीक है, क्या सीखना है तुमको, राइट? देखो, द बेसिक ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इज टू कम्युनिकेट, राइट? यार चैट जीपीटी मिल गया तुमको फ्री में, एंड एवरीबडी आई होप हैज द वर्जन ऑफ अ चैट जीपीटी नाउअडेज. गो प्लान तो लिया होगा काफी लोगों ने एंड गॉट इट फॉर फ्री, राइट? फ्री की चीज तो तुम छोड़ते नहीं हो, दैट इज व्हाट आई नो वेरी वेल. तो try it out, right? Have a chat with the good AI tools whenever you're free, half an hour. You can just have a good communication. The beauty of communication is it can be only improved when you communicate, right? तो communication आपको करना पड़ेगा. That is one thing, right? Parallelly, what is something we have done it for you guys is, again, tomorrow we have planned a one very interesting event, right? And if you can join it out, trust me, it's going to be helping you only. देखो, लाइफ में सीरियस लोग कम है, राइट? बट अगर आप उसमें आ गए, यू कैन अचीव योर माइलस्टोन. देखो, समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम इन योर करियर, योर सक्सेस इज गोना बी डिफाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. प्लीज अंडरस्टैंड. कभी कभी जीवन में आपका सक्सेस कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, है ना? कोई कह रहा है एएफएम का पेपर याद आ रहा है, हाँ सच कह रहे हो, बट 90% ऑफ द थिंग्स इन योर इन योर जर्नी इज गोना बी डिफाइंड बाय यू. जैसे कि आज मुझे पता है मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, बट लेट्स से इफ आई डोंट वर्क ऑन दैट फॉर नेक्स्ट 40 days, इट्स माय मिस्टेक. एग्री? बट लेट्स से इफ समवन अदर सिटिंग आउट हियर, राइट, स्नेहा जी ने अपना कम्युनिकेशन पे वर्क कर लिया, ऑफ कोर्स शी इज गोना बी गेटिंग एज ओवर अदर्स. 40 दिन बाद शी इज गोना बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर. इट्स ऑल अबाउट वन थिंग एंड दैट्स अ टाइम. Please understand it out. सारा खेल समय का है. One of the very interesting thing I want to tell you, the opportunity cost of learning today is less as compared to after becoming a CA. What is your opportunity cost today? आपका opportunity cost तो पता है ना क्या होता है opportunity cost? Right, हाँ. What is your opportunity cost today? Your opportunity cost of you today is 3,000 rupees per month. हाँ. What is a stipend रे? क्या हंसते तुम लोग? Stipend है ना 3,000 as per ICI. That is your opportunity cost. What is your opportunity cost of learning after you become a CA? 3,000 rupees per day. Per day.
तो आप देखो कि आपको ये आज करना है या 2 महीने बाद करना है, दैट इज देयर, राइट? योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, next I was talking about how you can again improve your communication skills. So tomorrow also we have a very interesting event on networking. It's on afternoon at 2:30 for 1 hour. You can join that out. You'll make some good friends. We'll have a chit chat. We'll have a good communication. That is there, right? A lot of upcoming events are there. I was just trying to show you out, so you can run through it as well. ठीक है, तो आप आइए. अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, इफ यू वांट टू मेक गुड फ्रेंड्स, देन ऑफ कोर्स मंडे को वील हैव अ डोमेन डिस्कशन, देन वी हैव अ जीआई प्री किक ऑफ एंड आर्टिकलशिप एंड अदर इवेंट्स आर देयर. ठीक है, तो दैट इज द सेकंड थिंग यू कैन रन थ्रू. Third, if you again want to improve your communication skills, we also build out an AI bot. You can practice with the AI bot, which is there. यहाँ पे भी आप practice कर सकते हो. But again, it requires a coin. तो आपको chat GPT में कर लो. It's a free affair. तो that is there. Although you can practice it out before your interviews from here, where you can practice it based on interview questions. So that is there. तो 3 चीजें मैंने बता दी. How do you improve your communication skills? ठीक है, that is done. Next, very interesting. सर सारा खेल रेफरेंस पे डिपेंड करता है. If you have a one right reference, your problem is sorted. You can get where you want to get into. It's like, let's assume Modi ji is my best friend. Ah ha 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 ha. ठीक है. What can happen if Modi ji is your best friend? Anything below the sun and anything above the sun, I can do it. है कि नहीं? That is how the reference plays an important role, right? But before I go into this, let me just show you कि what is the power of a reference, right? मैं आपको पहले पावर दिखाता हूँ कि रेफरेंस होने से ना क्या होता है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव रियली वर्कड आउट फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स फॉर द सम ऑफ द पीपल अराउंड. ठीक है, 2-3 आपको एक स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ. आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस होने से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है. ठीक है, देयर वाज वन ऑफ माय गाय, मिस्टर राजेश सिंह, राइट? ही रीच्ड आउट टू मी फ्यू डेज बैक ऑन लिंक्डइन सेइंग दैट कि सर, आई हैव जस्ट एनरोल्ड फॉर योर बैच व्हिच इज देयर, एंड आफ्टर फ्यू डेज, right, and although you'll be shocked enough, within I think 5 or 6 days, he have been able to get a job in Dubai. Right, वो बंदा दुबई प्लेस हो गया. Similarly, this happens with the Shivam also. This is one of the student of GR82. दुबई में जॉब लग गई. 3 दिन में 3 इंटरव्यूज, 3 ऑफर लेटर्स आ गए. राइट, तो दैट इज हाउ इट गोज. मतलब क्या होता है, देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? वंस यू हैव अ राइट रेफरेंस, योर वर्क विल स्टार्ट बिकमिंग फास्टर. लेट्स से इफ यू नो समवन, देखो, आर्टिकल ऑफ अ बिग फोर को जानने से आपका कुछ नहीं होना. रेफरेंस क्या होना चाहिए? रेफरेंस तगड़ा होना चाहिए. शुड बी फ्रॉम द टॉप और समवन फ्रॉम अ इंडस्ट्री और समवन फ्रॉम द पीपल वर्किंग इनटू कंपनी फॉर 5-6 years. If someone of those quality of a people refers you, your life will become easy and faster. सर सवाल ये है कि ढूंढे कैसे? सिखाता हूँ. Let us learn through कि how do you find out a reference. Right, the first thing is, right, there are small things where you can easily do it out, which is there. जैसे कि you can join some places where you can find out some good people. You can join some good gyms. If you guys, those who are gymming guys, you can think of joining a good gym or a sports club. I'll just share one of the very interesting story. Yesterday, I was playing a badminton, which is there. So I was playing a badminton with a guy. After the badminton is done, I had an interaction with that guy. I asked him, "What do you do?" He says, "I'm a pilot at Air India." I was like, "Wow." I never expected that guy is gonna be there in a badminton court. Right, so that type of things happens. Attend the events which are happening around, either ICI events or my events, which is happening it out, which is there. ICI conferences are also happening in these days, right? They can be part of the same. And if you are really keen to get into startup, there's again one of the venture which is called as the Ichai Ventures. You can just search it out on Google. You will be able to see a lot of free events happening in around there, right? But those events are only for the startup guys, right? तो अगर किसी का जर्नी है कि bro, I want to build a startup or I want to get into startups, you can try Ichai की काफी सारे events होते रहते हैं आपके city में, right? पुणे में, all the tier 1 cities mostly will have those events which is there. So you can be a part of any of the things which is there. Number 2, I think we have a good networking event. You can join tomorrow. You'll make some good part. Of course, workshop, if you are a part of that, is what you get. And I'll just show you how do you get a references on LinkedIn. Okay, so let me just again show you my LinkedIn, which is there, right? Okay. Just give me a fraction of a second. Let me share my screen. Okay, so this is my LinkedIn. Let's say I'm searching for one of the guy, Tarun Binish. That's the thing. It will help you understand what I'm trying to show you. So this is a guy who is a partner with PwC, although he is a very big YouTuber these days. But let me just show the chat what I had with him, right? Just a fraction of a second. Let me just show you a message which is there, right? So if you could see the screen, right? It was a message on 8th of January 2024. I reached out to him saying that, hey Tarun, I hope you are
Doing great. It's nice to hear it from you. Right? I have a community of this. Blah blah blah. Let's connect for a quick call and let's have some great things around. You know what happened after this, right? We had a great conversation, and whenever I go to Delhi, he's again a good friend of mine. Right? I can talk to him anytime. Well, how did it started? This is called as a cold message. इसको हम कहते हैं cold message, right? So this is one of the art which you have to learn, right? This will give you a lot of edge which is there, and trust me, this will help you to shoot your profile faster, right? अब मुझे कभी भी दिल्ली जाना है, तरुण is someone which is there, but ऐसा नहीं है कि you reach out to anyone, anyone will reply. The rule is you reach out to 110 replies, right? मतलब that is how it goes. ठीक है, तो कुछ लोग जवाब नहीं भी देंगे, बट अगेन यू हैव टू लर्न दिस आर्ट ऑफ अ कोल्ड मैसेजिंग विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग एंड विच विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स. बट उसके लिए क्या होता है, प्रोफाइल चाहिए वैसी, राइट? मतलब थोड़ा सा कुछ दिखना चाहिए ना प्रोफाइल में. कुछ लिखा ही नहीं है, लिंक्डइन सिर्फ नाम लिख दिया और छोड़ दिया एंड यू एक्सपेक्ट कि पीपल विल रिप्लाई. दैट्स नॉट गोना बी हैपनिंग अराउंड. So that is something you have to do. Start connecting with the people on LinkedIn, which is there. है ना? So spend some time here, quality time. You'll get a good edge. है ना? So that is there. Although I can show you multiple examples, but again, because of a time constraint, I have to just restrict myself. So that is there. Next is, of course, the most interesting thing, and that is a resume, sir. Ki, how do you build your resume, which is there, and how do you take an edge on the same? So let me just show you again, how do you edge on your CV. I'll just show you some of the CVs which is there, right, of my students. Okay, how do this people have pivoted in their journey, right, and how do people have got into some great things. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. Right, there is one of my student. Her name is Ritika Sinha. Right, I'll just share her story. Very interesting story. Right, she has cleared her CA in 6 attempts, 3 in inter, 3 in final. But what she wanted was, she had articleship from a mid-sized firm, had 2 transfers in articleship, huge gap. But what she did, she wanted to get into consulting and IB. Right, so what she did, rule of a resume is simple. जहां जाना है, जो करना है, उसके बारे में दिखाने का. राइट, आईबी में जाना है तो आईबी के बारे में बात करो. राइट, चीजें आती हैं तो लोग लेंगे. राइट, तो शी स्पोक अबाउट कंसल्टिंग, शी प्लेड अ सिमुलेशन गेम, and she had a IB masterclass which is there. Now let's see what happened to her. Right, I'll just open her profile. Right, this is her profile which is there. Right, Ritika Sinha. Let's see how do people pivot it out in the journey which is there. अब देखिए, articleship from 2 firm, mid-size firm. Right, articleship completed long back. After that she got into GT valuation. राइट, और ऐसा भी नहीं है बिग फोर के आर्टिकल नहीं है और ना ही ये रैंकर है. अटेम्प्ट है भाई, 3 अटेम्प्ट इंटर में है और 3 अटेम्प्ट फाइनल में है. तो दैट इज व्हाट यू कैन सी इट आउट. स्टिल शी वाज एबल टू पिवट इनटू वैल्यूएशन डोमेन. व्हाई? The reason is quite simple. CV spoke very well for her. She prepared before the results are out. She took an edge on the same. After that is done, she moved to PwC consulting. राइट, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आप सोचो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज अ ड्रीम ऑफ all the rankers which is there. Without getting a rank, she got there. Reason? Preference. She had a very good friend into consulting. She pivoted it out to consulting. And again, now she has moved to Deloitte Consulting now. आप सोचो, एक नॉन रैंकर बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? एक नॉन बिग फोर बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज ऑल अबाउट अ टाइम, रंजन भाई. राइट, आज से लेके रिजल्ट आने तक अगर टाइम पास किए तो यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व. Please understand, you'll get what companies will give you, but if you want what you deserve or what you actually keen for, trust me, this 40 days will pivot your journey. That will decide what you can build for. Right, so this is what a real journey is. I can show you multiple examples which is there, and she was my very old student of, I think, 48 batch which is there. So she has been able to pivot it out her journey. What she did smartly, the same thing which I told you. CV mein she started speaking about and showing more about the proof of work. This is called as a concept of proof of work. I'll just show you one more very interesting proof of work concept. There's one of my student, Mr. Vishal. He also did the same thing. बंदे को जाना था दुबई, right? So what he did, he prepared a very interesting pitch deck using a Gamma. It's a AI tool which is there. ज़्यादा उसने वो नहीं किया. He invested 4-5 hours. Right, he prepared a very nice PPT or pitch deck which is there. Talked about the Dubai real estate market. Right, ये एक ऐसा बंदा है जिसको इंडिया में बैठ के दुबई में जॉब मिली है. Right, that is something which is one of the best thing you can get it out in your career. Right. So he has prepared this PPT for the Dubai real estate market. What he did, he messaged to all the people and CFOs, CEOs
of the real estate companies in Dubai. It's very easy to pull out email IDs these days, right? So what he did, he just messaged it out to the people out. And what he did, what happened because of this, right? Because of this, he is in Dubai today. BMW developers. I hope you know the company BMW developers. I don't know, but it's a Vivek Oberai's company, which is there, right? And it is one of the, I think, uh, sponsor of ICI, right? सबसे बड़ा sponsor है भाई. I think platinum sponsor है. It has given, I think, 1 million dirhams to ICI. मतलब आप समझ लो 2 करोड़ 50 लाख. That is a sponsorship which has given by them. मेरे आंखों के सामने उन्होंने दिया था. मतलब I was in the Dubai conference, so I just saw it out. So he's working there. How cold message, guys. He was smart enough to invest his time. He was smart enough to work for his journey, right? He was smart enough to pivot his journey out. The question is, you can also do it, but the only thing is that सारा खेल समय का है भाई. मतलब if you invest your time nicely, you will get it. If you'll not do it, someone else will get it. That is there, right? So that is something which is there again. 5 months old post which is there. Okay, I'm just showing you what people have done. You can also be in his place, right? So again, he was my student. He just said it out, thank you and stuff. I'm just showing you the post also. कि भाई अपना ही student है, he's written the post also. So I want you to be in this part of a journey. The problem is many of you realize it later कि भाई हम बाद में करेंगे, result आने के बाद देखेंगे तो हो जाएगा. That is not gonna be happening. I can show you multiple profiles. आप बोलो तो 100 प्रोफाइल दिन भर यही कर सकता हूँ. कुछ नहीं है. मेरे को क्या करना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में I have to just write my name and I have to press enter. Right, I'll get the list of people those who have placed because of me. राइट, इसको लिखने का और सॉर्ट करने का लेटेस्ट पे आपको 1,000 लोग नाम मिल जाएगा. हवाबाजी करना है तो दिन भर कर सकता हूं मैं. दैट इज देयर. जैसे अभी देखो 5 घंटे पहले पीडब्ल्यूसी ज्वाइन किया. राइट, ये कहाँ ज्वाइन किया? राइट, इसने भी एक जगह ज्वाइन किया है. राइट, मजार ज्वाइन किया है. ये तो मेरा ही पोस्ट है. राइट, ये का कोर्स कंप्लीट किया है. तो दैट इज देयर. अगर हवाबाजी करनी है तो दिन भर कर सकते हैं. ये डेलॉइट ज्वाइन किया है कल. So that is what not I'm doing. What I'm trying to show you is ये कहाँ ज्वाइन की? RSM ज्वाइन की, right? So that is what I can do कि भाई ये कहाँ ज्वाइन किया? HCL Tech ज्वाइन किया. वो कर सकते हैं, but that is not what I'm trying to show you. What I'm trying to show you कि how you can also build it out and go there. What people have done. Gone are those days जब आप सोचते हो कि भाई फूफा जी जॉब लगा देंगे और ये हो जाएगा. That is not going to be happening. ठीक है. तो what you have learned so far कि भाई, right? What all things are there which I can change? And I was talking about how you can change it out. Right? ये चीजें कैसे change कर सकते हैं? Resume में you can work on this much skills and that is going to be getting you an edge. Now, few things before, of course, I move forward discussion. Right? Just one more small update. I just wanted to give it to you. Life always offers us two choices. Right? अभी तक आपको ये समझ में आया कि क्या change करना है? I just spoke about how do you change it out, which is there. Now I'm just talking about one more interesting thing. कि life will offer you two choices, right? You have to change it out, that is for sure. अब आपके पास चॉइस है, या तो आप खुद से कर लो, दैट इज व्हाट इज देयर, आपको पता है क्या करना है, या तो आप किसी की हेल्प ले लो, राइट? दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर. इफ यू वांट अ हेल्प, राइट, वी आर देयर फॉर यू. वी विल हेल्प यू आउट एंड टू एंड प्रोसेस, बिकॉज यही हमारा काम है, विच इज देयर. राइट, अभी ये जो चीज आपने 1 घंटे में सीखी है, ऑफ कोर्स दिस इज गोना बी टॉट टू इन द रिगरस करिकुलम फॉर 14 odd days, for 3.5 to 4 hours every day, which is there. Right, and that is what we do it out through our interview training workshops. Right, I'm not saying you कि आपको आना ही है. आपको डिसाइड करना है आपको आना है कि नहीं आना है. दोस्त, आपको पता है क्या चेंज करना है. अगर आप खुद से कर सकते हो, वेल एंड गुड. अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको, इट्स लाइक टेकिंग अ क्लासेस. अगर आपको खुद से नहीं कर सकते, इफ यू वांट अ क्लासेस, यू कैन हैव आवर बैच व्हिच इज देयर. Right, so what we do, right, we run the training program which is called as a Getting Interview Ready workshop, right, where we have trained more than 18,000 chartered accountants till now, right, and we have placed the students in the company you name, right, including Google. अगर आप बोलोगे कि भैया गूगल में भी आपके स्टूडेंट है क्या? हाँ जी दोस्त, हमारे स्टूडेंट गूगल में भी है. राइट, इसमें क्या कवर होगा, कैसे कवर होगा, इस पे वी हैव अ डेडिकेटेड सेशन फॉर यू गाइस व्हिच इज गोना बी देयर, राइट, ऑन आई थिंक ट्यूसडे. राइट, एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपको आना है, उसका प्री किक ऑफ सेशन है, व्हिच विल जॉइन इट आउट, वी कैन कवर इट आउट. बट वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, right, we cover everything like mock interview. We'll get a one domain masterclass free of cost. We have a regular doubt solving session happening in, right, which is there. Of course, one of the best USPs we carry is we'll support you till the time we get placed. Sir, what if my result is negative? No need to worry. ये खुदा ना खास्ता अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है,
कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अगली बैच आ सकते हो। अगली बैच मतलब जो होगी नवंबर वालों के लिए, नवंबर 26 वालों के लिए, वो बैच आप फ्री में आ सकते हो। दैट इज देयर, मतलब देयर इज नो डाउन साइड टू इट। ऑफ कोर्स यू विल गेट अ एआई फॉर फाइनेंस कम फ्री मास्टर क्लास आल्सो। One of the best thing we played out in the batch is a business simulation, which you were seeing on the Ritika CVs, and a lot of people have got placed because of this. We'll have a dedicated session for ICA campus, right? We have placed more than 18,000 CS, and the best thing is that you have a community access. तो कहीं पे भी आपको किसी भी कंपनी में रेफरेंस चाहिए होता है, you just ask me out. I'll give you the reference of the students which is there. You will get a coins, and of course you'll get a network with top-notch industry leaders. तो मजेदार चीज क्या है कि सेशंस में आप काफी सारे पार्टनर्स और डायरेक्टर से ही मिलते हो, जैसे कि मुकेश सर इज गोना बी जॉइनिंग फॉर अ मॉक इंटरव्यू, ही इज अ पार्टनर ऑफ बीडीओ, right? Rajneesh sir is a partner of KNAV for a startup. He was ex-partner of KPMG. To invite all the top-notch industry leaders, those who are going to be joining in and coming in to you, that is there. But इसमें क्या होगा, कैसे cover होगा, right? You will be able to see it out in the dedicated session which we have for a GR batch, which is there. ठीक है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली कैन थिंक ऑफ। ठीक है, so one more thing before I move forward, right? I'll just tell you how and where you can register, right? So you can go to our website cavong.com, right? यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा, there are 2 batches which is coming in, right? क्या कवर होगा डिटेल में, इस पे 1 घंटे का अलग से सेशन लेंगे, right? I just don't want to waste our time now, right? तो 96 बैच विच इज अ मॉर्निंग बैच, जो टाइम पे आप सोते रहते हो, हा, जब तक आप उठोगे तब तक लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग बैच। एंड इवनिंग बैच इज अगेन ऑन इवनिंग टाइम, बट इट इज स्टार्टिंग ऑन 26th ऑफ मे, दिस इज स्टार्टिंग ऑन 20th ऑफ मे, दैट इज देयर, है ना? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छा एक चीज, अगर आप सीरियस हो तो ही आना, बिकॉज क्या है, हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कराएंगे आपसे, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज क्या है कि इट्स अ वेरी रिगरस करिकुलम, इफ यू कुड सी इट आउट ऑल्सो, आई जस्ट शो यू। तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ट्रैक होता है कि आप क्लास में आते हो भी नहीं आते हो, राइट? सब कुछ दिखा जाता है कि आपकी अटेंडेंस तक देखी जाएगी, यू विल बी डिवाइडेड इनटू टीम्स, राइट? आपके रैंक तक दी जाएगी, इंक्लूडिंग योर परसेंटाइल रैंक, कि आप कितने पानी में हो। और सबसे मजेदार चीज, ये 3 इडियट्स वाली फीलिंग देगा, है ना, कि रैंक पब्लिकली नहीं दिखानी चाहिए, है ना? बस 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 वही वाली फीलिंग देगा, क्योंकि आपका ये डैशबोर्ड रहेगा पूरे बैच का, आपका सबका परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाएगा। लेट्स से यू आर इनटू टीम्स, तो let's say you're a part of a team, the intentionally we put the people from different parts of India in your team. So even if you're from north, you'll get a people from south in your team, so that you can work on your communications as well. So that is there, and one of the best thing we do is we play this simulation, ये वाला हम लोग खेलते हैं, which is there. This is played by all the top B schools and all the IIMs of India. तो ये वाला हम सिमुलेशन खेलेंगे, दैट इज ओनली देयर इन अ प्री रिजल्ट बैच, पोस्ट रिजल्ट में हम नहीं खिलाते हैं। तो दैट इज समथिंग यू विल बी अ पार्ट ऑफ, व्हिच इज देयर। और डिटेल में क्या होगा समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसके लिए अलग से अपन सेशन लेंगे इवेंट्स में, राइट? अ डेडिकेटेड सेशन इज देयर ऑन 19th, ऑल्दो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th, बट ठीक है, राइट? 19th इवनिंग को यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या होगा। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज डू रजिस्टर, ठीक है? तो दैट इज देयर। चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, राइट? बट आई थिंक सो फार द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ये चीजें समझ में आ गई। और कुछ मुझे 10-12 इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है आपको कि हाउ डू यू पिवट इट आउट, बट सो फार थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस, यस और नो? यस और नो, यस और नो? हाँ, यस सर, क्लियर है, क्लियर क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर। कोई कह रहा है 96 और 97 में क्या अलग है? कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मेरा टी शर्ट अलग रहेगा। आय हाय हाय। ठीक है, चलो ग्रेट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज अलॉट, लेट्स प्ले अ स्मॉल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। एक छोटा सा गेम खेलते हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मैं आपको स्क्रीन पे एक सवाल दूंगा, जो भी बंदा सबसे पहले जवाब देगा उसको एक गिव अवे मिलेगा, राइट? वर्थ ₹1,500, एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा मेरे तरफ से, बट जवाब आपको यूट्यूब लाइव पे देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब आपको यूट्यूब लाइव पे देना पड़ेगा। जूम का मीटिंग मत छोड़ के जाइए, बस जूम का मीटिंग छोड़ के नहीं जाना है, यूट्यूब लाइव पे जाएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। जो भी बंदा सबसे पहले आंसर करेगा उसको गिव अवे मिलेगा वर्थ ₹1,500। हाय 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 हाय। देखते हैं कौन। एक इंटरव्यू क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, सिंपल सा इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है? नाउ इट इज दिस इज गोना बी आज, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है मैरिको का, ठीक है? देखते हैं आप में से कौन जवाब दे सकता है। यूट्यूब वीडियो का और चैनल का लिंक मैंने चैट पे डाल दिया जूम वालों के लिए, और यूट्यूब वाले तैयार हो जाइए, राइट? तैयार हो जाइए, पहुंच गए सब यूट्यूब पे, देखते हैं, राइट? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे सकता है आप में से, ठीक है? और क्या आप ये इंटरव्यू का केस स्टडी क्रैक कर पाते हो कि नहीं, देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको फटाक से आंसर करना है। जो भी इंसान सबसे पहले आंसर करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है?
विनर एंड में अनाउंस कर देंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, यूट्यूब पे रेडी रहिए, सब आ जाइए, राइट? I'll just show you a small question on your screen. You have to answer it out in 3, 2, 1 and go. You have to tell which company you will buy and which company you will sell. हा। ये एक मैरिको का इंटरव्यू क्वेश्चन है। कौन सा कंपनी बाय करोगे और कौन सा कंपनी सेल करोगे? हे चैट जीपीटी, हेल्प मी आंसर, हेल्प। ए चीटिंग कर रहे हो, करो चीटिंग। मुझे पता है। कम ऑन गाइस, दोनों साथ में लिखना है। जैसे कि ए और बी है तो आपको लिखना पड़ेगा ए बाय बी सेल, जो भी है आपका आंसर साथ में लिखना है। जल्दी 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 गाइस, यू हैव टू आंसर इट ऑन यूट्यूब लाइव, आंसर इट ऑन यूट्यूब लाइव, जल्दी गाइस। कोई कह रहा है यहां भी एएफएम पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस, लेट्स सी हु कैन आंसर इट करेक्टली, हु कैन आंसर इट करेक्टली। यू गाइस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू गाइस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आंसर इट ऑन a YouTube live. Give away worth rupees 1,500 to a correct winner. अरे जल्दी जल्दी बताइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार। बोल दो भाई, बोल दो। अरे बोलो यार, बचा है अभी तक, और चांसेस है, आप जीत सकते हो गाइस, और चांसेस है, आप जीत सकते हो। फ्यू ऑफ यू हैव गिवन इट, फ्यू ऑफ यू हैव नॉट गिवन इट। और जो चले गए यार, कैसे कर रहे हो? लाइक तो कर दो। क्या चीटिंग कर रहे हो रे? लाइक कर दो यार, अच्छा लगेगा बड़े भाई को यार, ऐसे मत करो, बड़ा भाई खुश हो जाएगा, राइट? अब यूट्यूब तक गए हो तो लाइक भी कर दो यार वीडियो को। हाय 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 हाय। चलो ग्रेट, चलो ग्रेट। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट। आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा क्या है, इट इज देयर, राइट? डोंट वरी, बट आई थिंक यू ट्राइड योर बेस्ट। चलो ग्रेट, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? डन। नेक्स्ट सर, ये तो हो गया। इसके साथ साथ nowadays lot of tools are also recommended which you should know, राइट? आपको नॉलेज होना चाहिए विच इज देयर। अगर आपको किसी टूल्स का नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट आप एआई फॉर फाइनेंस सीख लो। इसमें मैंने आई हैव टॉट एडवांस वीबीए विच इज देयर, राइट? वीबीए वगैरह मैंने आपको सिखाया है बढ़िया लेवल पे, आपको मजा आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। और जैसे भी अगर आप बैच में भी आ रहे हो तो 3-4 दिन है ही, राइट? इट्स 15 आवर्स कोर्स, 2 दिन में निपटा के खत्म कर लो, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग कर लो, राइट? विच इज देयर। देखो सारा खेल है आज से एक ही सवाल पूछने का, सीवी स्ट्रॉन्ग हुआ क्या? यस, अगर हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो करने का, ठीक है? मल्टीपल कोर्सेस आर देयर। जो एक डैशबोर्ड अभी मैं दिखा रहा था ना स्टूडेंट वाला, दैट वाज अ डेटा स्टूडियो, राइट? तो दैट इज समथिंग यू कैन थिंक ऑफ, राइट? बाकी आप एडवांस एक्सेल या फ्री एआई फॉर फाइनेंस, मेरा फ्री ऑफ कोर्स डला हुआ है कोर्स, कर लो, बढ़िया से मजा आएगा, दैट इज देयर। तो दैट इज व्हाट यू कैन वर्क ऑन। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रेज्यूमे। रेज्यूमे पे चाहिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आई जस्ट पुट इट आउट ऑन यूट्यूब, राइट? यू कैन जस्ट चेक इट आउट। Start reading some books, some good self-help books. अगर पढ़ना है तो The CEO Factory is very good book. It's written by Unilever, right? इनका पॉडकास्ट भी है, चाहिए तो आप वो सुन सकते हो। Work on your personality, oral communication, presentation. LinkedIn पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ. Start learning using things around which is there. Start building a personal brand, right? Either LinkedIn, Quora, Medium, but LinkedIn is something which is very helpful if you can start working on the same. Find out a good mentor for yourself for this journey, right? अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स यू विल गेट इट इन अ जीआर बैच, उसमें तो हम आपको देंगे। एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर योर जॉब प्लेसमेंट्स, राइट? ऑलवेज ऐसे यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इन सब चीजों पे आपको काम करना है, ठीक है? नाउ बिफोर आई ओपन द फोरम फॉर डाउट्स, राइट? जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी है, राइट? लेट मी जस्ट समराइज द एंटायर सेशन फॉर यू कि क्या करना है और कैसे करना है, एंड देन ऑफ कोर्स विल ओपन द फोरम फॉर डाउट्स व्हाटएवर यू आर कैरिंग इन, ठीक है? चलो ग्रेट। तो वी स्टार्टेड विद वेरी बेसिक स्टफ एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। आई टोल्ड यू अबाउट कि भैया हमको 5 चीजों पे काम करनी है। सर कौन सी 5 चीजों पे? रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, रेज्यूमे, कम्युनिकेशन, ब्रांड नेम एंड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। ओके सर, रेफरेंसेस कैसे लाना है? यू कैन बिल्ड आउट अ रेफरेंसेस यूजिंग लिंक्डइन. You can go to some places, gyms and other places out which is there, and you can connect with your senior, junior, and whosoever are there. Resume में क्या करना है? शो द वर्क वेर यू हैव टू गो, वो चीज डालो जहां जहां पे आपको जाना है,
Communication skills के लिए I told you about the chat GPT. How do you use it out? You can use our AI bot, or you can have a networking events and go to the places where you can go around. I just told you around multiple places as well. Brand name के लिए what you have told you about, you can check the course on 4 hours, or you can go for 1 day internship at BCG, or you can work with some of the small internships which will help you get some brand name. Articleship experience change करने के लिए what you can do, find out the domain where you want to get into and build out a specialization into that domain. And if you don't have it, don't worry, right? What I'll be doing is domain guidance session where I'll help you about the domain selection, and once that is done, I'll also gonna be helping you out with the same. Again, I told you about two things. You can do all this on your own, or you can take my help, which is there. जब अगर आप मेरी हेल्प लोगे तो इन सब चीजों का प्रॉब्लम आप मेरे पे छोड़ दो, इंक्लूडिंग दिस, बिकॉज यू विल गेट अ टेक्निकल मास्टर क्लास इन अ जीआर बैच ऑल्सो. लेट्स से यू चूज टू गेट इनटू स्टार्ट ऑडिट, तो आपको एक स्टार्ट ऑडिट का मास्टर क्लास मिलेगा जहाँ पे 0 से स्टार्ट ऑडिट सिखाया जाएगा 28 घंटे में. तो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, राइट? तो एवरीथिंग इज गोना बी टॉट यू प्रैक्टिकल, व्हिच इज. तो आप करिए बढ़िया से, राइट? आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू गाइड यू. इफ यू नीड एनी हेल्प, राइट, यू just let me know. I'm gonna be happy to help you out. And parallelly, I just showed you about the market trend, how the market is going to be moving and what all things are there. And we also discussed about the expected result date. So that is what we discussed all together. Okay. So that was all the discussion for the today's session we had. Okay. Done. So now we'll open the forum for your doubts, which is there. कोई कह रहा है AI for finance का आपको ये लेक्चर कहाँ मिलेगा? बड़ा ही आसान है, राइट? आप मेरे वेबसाइट पे भी जाओ, वेबसाइट पे जाओगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर आप वाला करोगे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, दोनों जगह डाला हुआ है, राइट? यू गो टू माय वेबसाइट, आई जस्ट रन थ्रू माय वेबसाइट आल्सो. देखो, जैसे आप अपस्किलिंग में जाओगे, यू विल गेट अ एआई फॉर फाइनेंस का कोर्स. दिस इज द फर्स्ट फ्री कोर्स व्हिच इज देयर, राइट, फॉर 15 आवर्स. यू कैन कंप्लीट इट आउट. कंप्लीट करोगे सर्टिफिकेट मिलेगा. इसका सेकंड वर्जन भी है, लेवल 2, बट अगेन पहले लेवल 1 तो कंप्लीट करो, फिर सोचना लेवल 2 करना है कि नहीं करना है, राइट? इंटरव्यू प्रेप के लिए इज देयर, राइट? देन वी हैव अ मल्टीपल मास्टर क्लास. किसी को है कि नहीं ब्रो अपने को सिर्फ स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना है, तो उसकी भी मास्टर क्लासेस है. कि नहीं ब्रो, ओके, मुझे सिर्फ स्टार्ट ऑडिट सीखना है, तो आप स्टार्ट ऑडिट सीख लो. ऑल्दो इफ यू डू इट आउट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पैकेज ऑफ अ जीआर बैच ऑल्सो. तो जीआर बैच में यू गेट 1 स्टार्ट ऑडिट, 1 मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द चॉइस. तो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. ठीक है, डन. हाँ, कोई कह रहा है सर, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड माई डोमेन. डोंट वरी, राइट? दिस प्रॉब्लम इज गोना बी टेकन केयर ऑफ. डे आफ्टर टुमारो यू कम टू अस, which is on 18th को we'll have a live session that is going to be going for 1.5 hour, which is there, and there I'm going to be telling out key how do you get it out in the same. ठीक है. 2-3 people have continuously asked me, sir, कि multiple attempts है, what are the chances? मोहित जी, देखो, I just told you academics is something which you cannot change. You also agree, I also agree. But what you can change is now in your CV. Although if you have attempts, it's okay. But what is not okay is कि आपका सीवी वैसा ही दिख रहा है कि यार बहुत गैप है, या गैप है चलेगा बट एक्सपोजर नहीं है, काम नहीं आ रहा है, तो दैट इज गोना बी बैकफायरिंग यू. So this is a time where you have to work on your CV, build it out, make it to the next level, which is there. Okay, so that is what we also help you out with a lot of students. There was one of a girl in our batch who cleared her examination after I think 15 attempts. She got placed very nicely into good companies. Reason, her storytelling skills was very nice. देखो, आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो, एट द एंड ऑफ डे अगर आप लिख नहीं पाए एग्जाम में तो कोई काम का नहीं. बस वैसा ही आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो, एट द एंड ऑफ डे इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल एट द एंड ऑफ टाइम, इट्स गोना बी बैकफायरिंग यू. So that is there. ठीक है. Will there be any GR batches coming in June? We only run 3 batches pre-results, right? 3 batches होती है और सिर्फ pre-result में simulation खिलाते हैं, which is there, right? Other batches are post-result. Post-result batches are of 12 days, right? Pre-result batches are of 14 days, which is there. बोलने का 14 होता है, but it get extended to 15 odd days. मतलब 15 दिन का हो जाता है, right? But आप ये सोचिए, वो 15 दिन का बैच नहीं है. इट्स देयर टिल द टाइम यू गेट प्लेस. मतलब इट्स गोना बी हैविंग अ रिकरिंग सेशन. जैसे कि कल आपको एक डाउट सॉल्विंग का लिंक आएगा, देखना आप सबके मेल पे. ठीक है, दोज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो वी हैव अ लॉट ऑफ सेशंस हैपनिंग इन फॉर द पीपल हु इज देयर. ठीक है. तो नेक्स्ट बैच जो आएगा 90th बैच, इट इज गोना बी इन 8th of June. दैट इज गोना बी अ मॉर्निंग बैच. ठीक है, दैट इज देयर. विल यू बी अटेंडिंग योर जीआर बैच? विल बी अटेंडिंग जीआर बैच सुन. थैंक यू. मिलते हैं सर. पहले अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के डोमेन वाइज डिटेल्स में यूट्यूब में बताया था, जिसका फुल कोर्स इंक्लूडेड है. हाँ, तो नहीं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वो अलग है. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑल्सो मास्टर क्लास भी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. जितना हमसे होता है उतना हम फ्री में डालते हैं दोस्तों. वी ट्राई आवर बेस्ट टू कीप द थिंग्स व्हिच इज देयर.
एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, बट अगेन हमें भी हमारा दाना पानी चलाना है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अगर आप रेज्यूम बनाने का सोच रहे हो, वी हैव अ वेरी नाइस वेबसाइट विच वी हैव बिल्ड इट आउट, दैट इज ऑल्सो यू कैन रन थ्रू, यू विल बी एबल टू सी इट ऑन अ टूल सेक्शन, रेज्यूमे बिल्डर। इसको जरूर ट्राई करना, आपका सीवी 3 मिनट में बन जाएगा, जो आपने वर्ड में बनाया उससे 10 गुना अच्छा बनेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, मजा आ जाएगा आपको, विच इज देयर वेरी इंटरेस्टिंग, अपने आप एआई ड्रिवन है, एंड देयर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स विच इज देयर, राइट, यू कैन क्रिएट योर रेज्यूमे वेरी इजीली, मतलब वेरी फास्ट, वेरी इजीली, एकदम खटाखट तरीके से आप बना सकते हो, राइट। आपको अलाइनमेंट चेंज करना है तो वो कर लीजिए, ठीक है, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए, तो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ, राइट। यू कैन कस्टमाइज मल्टीपल कलर्स, यू कैन कस्टमाइज द फॉन्ट्स विच इज देयर, काफी सारी चीजें नई नई आ चुकी हैं यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। ठीक है, तो जो पुराने स्टूडेंट है, दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ, दे विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, राइट। अगर आपको इसको ऊपर करना है तो इसको ऊपर कर लीजिए, इसको और ऊपर करना है इसको और ऊपर कर लीजिए, एकदम फटाफट है, एंड इट्स फ्री, राइट। पैसा तभी लगेगा जब डाउनलोड करोगे सीवी, ठीक है। एआई से इधर रिव्यू करवा सकते हो, दैट इज देयर। फॉर्मेट, अभी फॉर्मेट चेंज करना ये नहीं चाहिए, चलिए चाहिए डाल लो, 1 सेकंड में चेंज हो गया। फॉन्ट चेंज करना नहीं भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ले लो भाई। तो वेरी फास्ट, राइट, एआई टूल, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, यू लव इट, यू बिल्ड इट आउट, which is there, and it's hardly a 20 coins, मतलब you get 100 coins free of cost, 50 on login, 50 on completing profile, and anyways if you're a part of a GR batch आपको और 300 coin मिलेंगे, तो that is also taken care of। In short, leave your stress of interviews to me, we'll take care of it। Future of industry versus CA firm, Big Four, again we'll have this discussion when we'll have a domain guide, domain wise session, I think that is going to be helping out। Please share FTH role. Yes, so what we'll do, right? We will be sharing the vacancies which are out in the market for semi-qualified or FTH role in the WhatsApp community group. If you have not joined the same, please do check it out. It is going to be helping out for the same. अच्छा, कोई पूछ रहा है, any discount in the GR batch? No, brother. Right, the fees is same for the last 2 years. Right, I think पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से फीस सेम ही है, which is there. But हम लोग कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिया उसमें, तो फीस इज एनीवेज नॉमिनल विद दिस। सबसे अच्छी चीज उसमें जीएसटी आपको चाहिए तो अपने नाम पे ले लेना, मतलब ऑप्शन ऑफ अ जीएसटी इनपुट इज आल्सो गिवन टू यू। ढूंढो अपने पप्पा की फर्म है कि नहीं, कितना अच्छा फीचर डाल दिया है ना। कोई आई थिंक काफी कम एजुकेशन वाले देते हैं, हम लोग तो ऑप्शन भी दिए, आपको चाहिए तो हम तो चाहते हैं तुम लो भाई, गवर्नमेंट को देने से अच्छा तुमको देंगे जीएसटी, है कि नहीं, दैट इज देयर। B2B बन जाओ हमारे कस्टमर। सर, इन एकेडमिक्स वेदर स्कूलिंग वाइल बी कंसिडर्ड स्टेट, देखो स्कूलिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है योर सीए फाइनल मार्क्स, राइट, एंड इट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट एन एज व्हिच इज देयर। कुछ डाउट्स यूट्यूब पे भी आए हैं, राइट। एआई वाला सीवी जनरली गेट रिजेक्ट होता है क्या? द आंसर इज नो ब्रदर, राइट, दैट इज नॉट द केस, राइट, बिकॉज 90% ऑफ द कंपनीज को फॉर्मेटिंग अच्छी चाहिए, और फॉर्मेटिंग अच्छी आपको सिर्फ एआई से आती है। मैनुअली भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड में भी बना सकते हो, बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब अगर आप वर्ड में सीवी बनाने जाओगे इट विल टेक 3-4 days, बट अच्छा सीवी, राइट, फॉर्मेटेड वेल एंड स्टफ, बट एआई टूल से खटाखट आधे दिन में यू कैन हैव अ बेस्ट सीवी व्हिच इज देयर, राइट। हाँ, नेक्स्ट बैच 8th ऑफ जून से रहेगा, राइट, विच इज देयर, मोटा मोटी 8th के आसपास हम सोच रहे हैं, विच इज देयर, है ना। तो 8th ऑफ जून से यू कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट बैच, ठीक है, डन। सर, शुड आई गो फॉर अ जॉब नाउ? हैव गिवन अ ग्रुप 1, आई एम गिविंग अ ग्रुप 2, क्लियर द ग्रुप 2 विच इज देयर। देखो, आई वुड से जॉब में जाना चाहिए कि नहीं, अगर आपको अच्छा मिल रहा है गो फॉर इट, इफ यू नॉट गेटिंग समथिंग ग्रेट, पैरेलली प्रिपेयर, अपस्केल, राइट, मेक योर सीवी स्ट्रांग एंड देन यू गो फॉर इट विच इज देयर, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट देयर रिजल्ट। मैं कहता हूँ देखो, जो आपके हाथ में है नहीं उसके बारे में सोचना नहीं, अभी आपके हाथ में क्या है, सीवी स्ट्रांग करना, वो काम करो, है ना। आपको जैसे करना है करो, मेरा हेल्प चाहिए मेरा हेल्प लो, खुद से करना है खुद से करो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये टाइम चला गया ना, देन यू विल हैव वन ग्रेट थिंग एंड दैट इज अ रिग्रेट, ठीक है, दैट इज देयर। और हमने जानबूझ के बैच मॉर्निंग में इसलिए रखते हैं क्योंकि मुझे पता है ये टाइम पे सब सोते हैं, तो इट इज गोना बी वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर एवरीबॉडी, कि जब तक आप सो रहे हो आपकी आदत लग जाएगी मॉर्निंग उठने की, एंड यू विल बी एबल टू डू ग्रेट थिंग्स, है ना। yes, I'll have a separate video on resume, don't worry about the same, right। How can we do internships now are less than 2 months? तो 2 महीने का इंटर्नशिप ले लीजिए, रिच इज देयर, आई थिंक दैट इज गोना बी हेल्पिंग आउट, ठीक है। जिम जा रहा था मैं तो मॉर्निंग में, बहुत बढ़िया बेटा, तो जिम जाना है, दोस्तों से लोग बनाइए, कनेक्ट करिए लोगों से, ठीक है। व्हाट इज अ गाइडेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, हाउ डू वी कनेक्ट? इसके लिए अपन कनेक्ट कर लेंगे
राइट। एक दो दिन दीजिए, मैं एक डाउट सॉल्विंग लिंक ग्रुप आप इसमें ही डाल दूंगा, तो किसी को डिस्कशन रहेगा तो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। स्नेहा कह रही 8 जून वाला मॉर्निंग रहेगा। हाँ मॉर्निंग रहेगा, राइट। सिर्फ इवनिंग में एक बैच प्री रिजल्ट होता है, एक बैच पोस्ट रिजल्ट होता है, बाकी पूरे बैचेस मॉर्निंग रहते हैं मेरे। ठीक है। लाइक आई वुड स्टिल कंसिडर फर्स्ट अटेम्प्ट इफ पास बोथ ग्रुप। बहुत बढ़िया। विच इज देयर अटेम्प्ट पे हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, बट अटेम्प्ट का ये होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स यू फिल्ड आउट ICA फॉर्म इज कंसिडर्ड एज अटेम्प्ट, राइट। हाय हाय हाय, किसी ने तो बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ लिया है। इन दिस फ्री टाइम प्लीज टेल मी हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। ओ भाई ये तो भाई दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जहां पानी कम था वहां हम डूब गए। नहीं बेटा, ये सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। बहुत ही खतरनाक दे दिया यार इंसान ने। ये सब छोड़ो, बोले फ्री टाइम में गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढना, ये बताओ सर। वाह, बहुत ही गजब, बहुत बहुत ही गजब दे दिया भाई बंदे ने। चलो ठीक है, आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने केस स्टडी दिया था उसका पहले। ठीक है, तो आई थिंक करेक्ट आंसर किसने दिया है सबसे पहले, देखते हैं हम लोग ने। बट मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर फॉर द केस स्टडी विच आई हैव शेयर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। द आंसर इज बाय सी सेल ई। बाय सी सेल ई, दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर द केस स्टडी विच इज देयर, है ना। द करेक्ट आंसर इज बाय सी सेल ई। अब देखते हैं किस इंसान ने सबसे पहले दिया है बाय सी सेल ई। कोई अगर मेरे को चैट पे बता पाए तो मजा आ जाएगा, है ना। स्नेहल का मुझे दिख रहा है, उसके पहले के चैट नहीं दिख रहे यार, एक सेकंड को। किसका है सबसे पहले बाय सी सेल ई, कोई चैट पे बता सकता है। ए तुम लोग चीटिंग कर रहे हो यार, है ना। कोई बता नहीं रहा है, कोई बोल रहा है मेरा ही सबसे पहले था सर। मेरा था। हाँ 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 हाँ, अब सब अपने नाम वाम भी बदल देंगे, है ना। सब अपने नाम वाम भी बदल देंगे, मुझे पता है। चीटिंग कर रहे हैं, है ना। मेरे इसमें तो स्नेहल का ही दिख रहा है ना। सर मेरा नहीं नहीं नहीं, मेरे इसमें तो स्नेहल का ही दिख रहा है, पता नहीं और आपके इसमें किसी और का दिख रहा है सबसे पहले तो बता दीजिए। बाय सी सेल ई, हाँ स्नेहल, स्नेहल जी आप सपोर्ट टीम, स्नेहल जी है क्या यहाँ पे। स्नेहल जी आप हमारी ईमेल आईडी ये सपोर्ट टीम को कनेक्ट करिएगा, support@cmong.com, राइट। कोई कह रहा है मैं भी स्नेहल हूं आज से। नहीं बेटा, आधार कार्ड चेक करेंगे अब तो तुम्हारा, है ना। हाँ इट्स इज देयर। पुराने मैसेजेस उड़ गए, हाँ मेरे भी उड़ गए भाई। मेरे अब जो भी नए मैसेज है उसमें सबसे पहले जिसका है उसी को देंगे, अब क्या करेंगे बताओ। उसके पहले का लोड नहीं हो रहा ना, सिर्फ स्नेहल ही दिख रही है उसमें टॉप पे। ये तो चीटिंग किया यूट्यूब वाले ने, पर ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, स्नेहल जी जो भी है वो रीच आउट करें। ठीक है, चीटिंग मैंने चीटिंग की, अरे मेरे को क्या पता था चैट उड़ जाएगी यूट्यूब की भाई। हे भगवान। कोई कह रहा है फिर से ले लो एक और। किस्मत अच्छी है स्नेहल की, नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यस, और क्या डाउट है, एक दो डाउट सॉल्व लेते हैं फिर चलते हैं। जैसे डाउट नहीं है, राइट, कल के इवेंट में आइएगा, नेटवर्किंग इवेंट में। और आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, अपने दोस्त भाइयों तक ये लिंक्स को पहुंचा दीजिए प्लीज, राइट। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल था तो प्लीज यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई शेयर द PDF व्हाट आई वाज जस्ट शोइंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, एंड पैरेलली कल का सेशन आइए, कल मजा आएगा गाइस। टुमारो विल हैव अ ग्रेट सेशन, राइट। इट इज ऑन नेटवर्किंग, नए दोस्त बनाएंगे। एक वादा करके जाता हूँ कि एटलीस्ट यू विल मेक 4-5 गुड फ्रेंड्स। कल नेटवर्किंग का इवेंट है, आइए सह राइट, अपने बीवी बच्चों के साथ आइए, मजा आएगा, राइट। ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलोंग, राइट। इट्स जस्ट अ 1 hour ऑफ अ डे बट यू विल मेक सम गुड फ्रेंड्स, इट इज देयर। देन वी हैव अ डोमेन गाइडेंस सेशन ऑन 18th, अभी रजिस्टर कर लो, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट। देन विल ऑल्सो हैव अ प्री किक ऑफ ऑन 19th। अगर आपको है कि बैच में ज्वाइन करना है तो आ जाओ, क्योंकि क्या नोट्स वोट्स प्रिंट आउट लेना है, 2-3 डाउट सॉल्विंग अटेंड हो जाएगा, रेफरेंसेस मिलने चालू हो जाएंगे। तो दैट इज देयर, राइट। वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ 18,000 स्टूडेंट्स दोज हु हैव प्लेस, तो आप सबका, आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा उस स्टूडेंट्स का। कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ गुड कनेक्ट विद देम, दैट इज गोना बी देयर, राइट। आर्टिकलशिप वाला तो काम करनी है, फिर एआई का आप ये है। तो अगर आपने रजिस्टर कर लिया है या करने वाले हो तो एआई का एटलीस्ट देखना चालू करो, because we'll build out an automation tool for you guys where you'll be sending a job automatically to companies such as that. ठीक है, तो that is something which I wanted to cover it out.
Thank you. I think we'll pause it out here. Still, अगर किसी को कोई doubts होंगे, I know there's a lot of doubts which is there. Right, no need to worry. Right, you can put it out my YouTube comment section. You go to the video, you put it out on the comment section. I'll be happy to answer each and every of the queries, whatever you have it out. ठीक है, या वी हैव अ मास्टर क्लास ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग आईबी का मास्टर क्लास है विच इज देयर, एंड सपोर्ट टीम का मैंने नंबर भी डाल दिया, अगर आपको कोई क्वेरी रहेगा तो आप उनसे भी रीच आउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी और जूम पे भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, दोज आर वाचिंग अस, बिकॉज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस आर गोना बी कमिंग इन, आई कीप ऑन अपडेटिंग लॉट ऑफ अपडेट्स रिगार्डिंग अ कैंपस। 3-4 महीने आपको मेरी ही शक्ल दिखेगी, राइट, क्योंकि क्या रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद कैंपस आएगा, कैंपस का स्मॉल कैंपस, बिग कैंपस, right? And lot of things are going to be coming. So thanks for joining in. Stay in touch. Bye bye. And if you have queries, do put it out in the comment section. See you tomorrow in networking event tomorrow, guys. Bye bye, guys. Thank you.